हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट्रस गेमिंग। आपका फिर से एक बार स्वागत है यार मेरे चैनल पे। तो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं माई राइज मोड ऑफ WWE 2K23, जो कि यार हमारा बहुत सारे न्यू फीचर्स के साथ आता है। जो लास्ट ईयर वाला माई राइज था उससे ये काफी डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग में मुझे दो मोड्स नजर आए। तो हमने जो फर्स्ट मोड चूज किया वो लेगेसी था, और जस्ट आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग में प्ले किया, क्योंकि उसमें मुझे सुपरस्टार क्रिएट वगैरह करना था। तो मैंने थोड़ा सा किया, और अभी जस्ट थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि बिगनिंग में लेगेसी मोड में क्या होता है कि दैट यू आर ऑलरेडी नोन टू अ लेजेंड। इसका मतलब है कि पहले से आप किसी नोन लेजेंड या हॉल ऑफ फेमर को जानते हो, और उसने आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई में लेके आया है। तो अभी जो हमारी सुपरस्टार है एमिली, जो हमने क्रिएट करी है, ऐसा दिखाया गया है इसके फर्स्ट कट सीन में कि एमिली जो है वो ऑलरेडी किसी हॉल ऑफ फेमर को जानती है, जिसका जो ऑलरेडी एक चैंपियन रह चुकी है, और उसका मॉली हॉली के साथ एक चैंपियनशिप मैच हुआ था और डिस्प्यूट चल रहा था। ठीक है। तो बस इतना ही दिखाया है कि मॉली हॉली और जो इसकी लेजेंड है हॉल ऑफ फेमर, उसके बीच में डिस्प्यूट चलता है, एंड दे आर एनिमीज स्टिल, वुमेन्स टच, वो सब चीजें जो वुमेन्स की आपस में एलर्जी वगैरह होती है। एलर्जी कह रहा हूँ, जेलस होती है। एलर्जी क्या बोल देता हूँ यार मैं भी। तो जेलसी जो वाली होती है वो है अभी भी मॉली हॉली, और जो हमारी हॉल ऑफ फेमर है। तो अभी ये हमारी जो सुपरस्टार है एमिली, ये हमारी हॉल ऑफ फेमर की रेफरल से आई है, और हमने इसको क्रिएट कर लिया है। सो अभी बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टिंग मेन्यू है हमारा। तो अभी देखते हैं यार। सो अपग्रेड पॉइंट्स 205 हैं हमारे पास, और बियांका बेलेयर भी खड़ी हैं, और शार्लेट फ्लेयर भी खड़ी है, और ये एक एवा मोरेन है, ये कुछ नया है। चलिए शार्लेट फ्लेयर की तरफ हम चलते हैं, चूज करते हैं शार्लेट फ्लेयर को, और देखते हैं शार्लेट हमें क्या बोलती I है। hope you don't think we're going to be friends. I certainly won't be taking it easy on you tonight. ओके। Hello to you too. Figured we'd go hard in the ring since you're Team Raw and I'm Team SmackDown, but, excuse me? Just because we both come from famous wrestling lineage doesn't mean we have anything in common. You're right. I'm better than you, both in the ring and out. Ugh. I have a lot of respect for your aunt. You, not so much. You're only here because you're cashing in on her legacy. But do your best not to make all of us second-generation superstars look bad, okay? Though it's gonna be hard tonight when you're competing against me and the rest of Team Raw. तो चलो, ये तो क्लियर हो गया कि अभी हमारा शार्लेट फ्लेयर से मैच होने वाला है, और देखते हैं। अच्छा, अभी फिर से बातचीत चलने वाली है। चलो ठीक है, अभी बियांका बेलेयर से बात कर लेते हैं यार। Hey, nice to finally meet the EST of WWE. What? Isn't that you? As in new S superstar in WWE. Ready to show Team Raw what's up tonight? You know it. That's exactly what I'm here to do. Now that's the confidence I like to hear. And remember, the rest of Team SmackDown has your back. Although, ideally, we would have at least met each other to get on the same page before today. Yeah, they said they were really trying to keep my debut a secret. I get it. I mean, the WWE Universe is going to lose their minds when they realize you're related to Justine. And don't think I'm not going to fangirl out and grill you after we win. You gotta tell me exactly what she's like. She's as awesome as you think. I pretty much spent every summer traveling with her on tour when I was growing up, just wanting to be her. Not sure much has changed, to be honest. I respect that. I mean, there's something powerful about honoring those who came before you. See you out there tonight. You got this. सो जस्टिन वही है हॉल ऑफ फेमर जिसकी रेफरेंस से हमारी सुपरस्टार एमिली आई है। Hi, I'm... LJ, little Justine. Yeah, I overheard. How precious. Yeah. I was actually going to say I recognize you from NXT 2.0. Ava Moreno, right? You had some great matches with Cora Jade. I didn't realize you had gotten drafted to SmackDown. Guess your famous WWE legend aunt hasn't been able to get you up to speed on everything. Honestly, we've been pretty busy prepping for my debut. I'm a little out of the loop on everything else. Who's your match with tonight?
I don't have a match on the show tonight. Not all of us are able to skip the line, LJ. Sorry, I didn't mean to offend you. There's a lot to take in, and I'm still trying to get the lay of the land. Let me lay it out for you. A girl named Ava works her whole life to be the best athlete she can be. Excels at some things naturally, puts in the time to get better at the rest. Gets signed to WWE, continues to grind at the Performance Center doing everything the WWE way. Makes a mark on NXT 2.0, wins her matches, and gets signed to SmackDown. Sounds pretty great, right? Yeah, sounds like it. Some of us work hard. Some of us work harder. And some of us, LJ, get to waltz into Survivor Series and get put into a match that the rest of us, those of us who have done everything by the book, would kill for. It does sound unfair. But I'm good at this. I got here on my own. Got here on your own? We'll see what happens tonight. Maybe you are good, and you'll prove that. Regardless, I haven't been given the same opportunity on this brand to prove how good I am. So excuse me if I don't play nice with little Justine, the legacy hire. तो चलो भाई, फॉरफिट एवा के साथ तो शुरू हो ही गया है। तो अभी देखते हैं अब मॉली हॉली। तो यार ये जस्टिन ने एक जस्ट छोटा सा कट सीन आता है स्टार्टिंग में, जिसमें जस्टिन जो हॉल ऑफ फेमर है उसने मॉली हॉली को बीट कर दिया है टाइटल के लिए, वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। तो मॉली हॉली जो है थोड़ी सी जेलस काइंड है जस्टिन से। तो अभी Sorry I जस्टिन के wasn't able थ्रू to ये check आई in है with तो you sooner. It's always nuts backstage before a major show. And I lost a full 20 minutes to Happy Corbin, who wanted to practice a stand-up routine on me. Luckily, Xia Li overheard and protected me from his bad jokes. How are you doing? Feeling good about tonight? Honestly, I'm ready. I've trained my whole life for this. All right. Let's take that confidence, earned or not, and channel it into a great debut. For what it's worth, despite my history with your aunt, it really is my goal to help you succeed here. You guys have... That's a conversation for another day. Stick around here long enough and you'll have history with everyone. Alliances, rivalries, heck, we even have our fair share of weddings. Although those rarely seem to work out. But let's talk about your debut. I've got your custom gear ready. Custom gear? Honestly, I get it. I wouldn't want to debut in it either. No, I'm... Huh. Not sure how this didn't get to you, but WWE management asked that you debut in a look that honors Justine's legacy. So they've made gear inspired by what your aunt wore when she won her first championship. Not that that specific match would be the moment I'd choose to commemorate. Justine got lucky. But I brought my own gear. I designed it myself. Besides, I'm not sure if I want to use my aunt's image to establish my own. I want to make my own mark. Listen. अभी ये यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है भाई कि जिसके थ्रू हम आए हैं हम उसके लेगेसी को ऑनर करें या हम अपनी पहचान खुद बनाएं। अब पहला है रिस्पेक्ट और दूसरा है सेल्फिशनेस। तो चलो यार रिस्पेक्ट के थ्रू ही चलते हैं। I'll wear the gear. Justine trained me. I wouldn't be here without her. And I do want to honor her legacy. If it gets me a massive pop, that's just an added bonus. Great. Management will be happy that you're towing the line. Just bring the performance to complement it. Maybe dressing like your aunt will even inspire you in the ring. Better go get changed. It's go time. शुक्र है बहुत सारी बकचोदी के बाद गो टाइम आया। एक बार जल्दी से ऑप्शन मेन्यू देख लेते हैं। सोशल मीडिया प्रोग्रेस, एट्रीब्यूट अपग्रेड, ऑप्शंस, मूव सेट, एंट्रेंस, अपीयरेंस। अपीयरेंस इज फाइन। एक बार जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि हमारी जो सुपरस्टार हैं एमिली वो दिखती कैसे हैं। देखो तो ये हमने उनका ड्रेस बनाया था गाइस। सो हमारी एमिली जो है हमारा ये ड्रेस कोड रहेगा थ्रू आउट द इवेंट। हम बीच बीच में चेंज करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे इवेंट्स खत्म होते रहेंगे हम ड्रेस को भी मॉडिफाई करते रहेंगे। तो चलो बढ़ते हैं यार वापस और आगे आपको और दिखा देते हैं कुछ कुछ चीजें। मूव सेट्स इसके मुझे अभी सेट करने हैं। मूव सेट मैंने अभी सेट करे नहीं है क्योंकि
मैं ज़रा उसके लिए टाइम लगेगा, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो अभी जो डिफ़ॉल्ट मूव सेट है यार हम उन्हीं से प्ले कर लेते हैं, ठीक है? और बाद में मैं इसके मूव सेट सेट करके एंड देन आगे का गेम प्ले खेलूंगा। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इस गेम प्ले का, उसमें आपको मूव सेट प्रॉपरली सेट नजर आएंगे, ठीक है? तो चलो जल्दी। अरे दोबारा शार्लेट फ्लेयर कहाँ से आ गया यार? अरे यार, एंट्रेंस 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 छोड़ो, मूव सेट, विक्ट्री, ऑप्शंस ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। एंट्रेंस एनिमी एंट्रेंस ऑन है, ठीक है चलेगा, ठीक है। अभी के लिए डिफिकल्टी नॉर्मल रखी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेजेंड पे भी खेल सकते हैं वैसे तो, ठीक है। सोशल मीडिया में कुछ ग्रीन ग्रीन चमक रहा है, सो लेट्स सी। टुनाइट आई एम गोइंग 23rd प्रीमियम, ओके बैक। आई हैव पता नहीं क्या बुक्स, he can someone ride me to the arena, I love a steak of fashion or survival nest, okay so these are all social feeds और ये मेरे प्राइवेट मैसेजेस हैं। अब इस आते हैं स्टोरी प्रोग्रेस देख लेंगे। एट्रीब्यूट्स अपग्रेड अभी एक मैच के बाद करेंगे, एट्रीब्यूट अपग्रेड, ठीक है। सो अभी शार्लेट फ्लेयर ये दोबारा से क्यों आ गया यार? चलो I hope you don't think we're going to be friends. I certainly ये won't. फिर से क्यों बकचोदी आ गई यार, Hello मुझे to you समझ नहीं too. Figured we'd go hard in the ring since your team Raw आई। just इसको जल्दी can't से be मैं right. स्किप करता हूँ यार, ठीक है। ये फिर से क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, Hey, तो इस what? बार मैं इसको जल्दी से Now स्किप I कर get it. दूंगा, I respect. ठीक है। हाँ यार ये पता नहीं क्यों, ये कुछ ना कुछ बग्स तो यार Hi. होते ही हैं, Well, है ना? Guess तो it. honestly, जल्दी से मैं I don't. फट से स्किप कर रहा हूँ इसको। Sorry. Let me. Yeah. It does. औरतें भाई वैसे तो पक 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 तो चलती रहेगी। मौली हॉली फिर से आ गई हैं, पता नहीं क्यों आ गई हैं। Sorry. ओके All right. You guys have That's a, custom. honestly. No, Huh. but I Listen. always. Great. मेक योर डेब्यू डेब्यूट क्या होता है भाई? मेक योर डेब्यू। हाँ तो ये है हमारी जस्टिन गाइस। जस्टिन ऐसे ड्रेस अप करती थी, और जो मैंने आपको बताया छोटा सा कट सीन आया था जिसमें जस्टिन और मॉली हॉली की फाइट होती है एंड जस्टिन जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाती है। उसके बाद तो हमारा मोड ऊपर देखो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, माई राइज द लेगेसी जो हम खेल रहे हैं। एंड चलो बढ़िया सा आपको गेम प्ले अब दिखाते हैं यार हम। भाई साहब सीधा ही सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। ओहो हो भाई, तो हमारी एमिली जो है वो जस्टिन की तरह ड्रेस करके आई है। Liv Morgan and Bianca Belair. Team SmackDown. Do you know who that भाई is? हमारी एमिली कितनी तगड़ी लग रही है और SmackDown is none other than the niece of WWE Hall of Famer Justine. The last legacy superstar I remember debuting at Survivor Series was The Rock. चलिए स्किप करते हैं, अब हमारी राइवल टीम की तरफ चलते हैं यार। It's Team Raw ready to battle for brand supremacy. And their opponents, Rhea Ripley, Charlotte Flair, and Bayley. Team Raw. The superstars from the Red Brand are here to prove they don't need to play mind games to come out on top. Well, if you're referring to the fact that Team SmackDown has a mystery partner, I think that's just good strategy. This night will be etched in WWE history one way or another. तो शार्लेट फ्लेयर, ओह भाई ये तो तगड़ी टीम है यार। रिया रिप्ली और बेली। चलो तो टीम रॉ जो है वो सही है। Time for what we've all been waiting for. Raw and SmackDown Survivor Series clash between 6 of the most talented superstars we've ever had in this match. 6. I count 5 seasoned WWE superstars and a green as grass rookie who looks like a deer lost in headlights. Justine's niece may not have a ton of experience or any really. ओ भाई ये तो रिया रिप्ली तो पेल रही है भाई। चलो कोई बात नहीं, अब हमारी बारी, अब रिया को पेलते हैं। चलो Stops Ripley's attack. Clothesline. And
और बताओ रिया, कैसा लग रही है? And she gets herself out of it for kick to the midsection. Oh. She certainly has the confidence of her aunt. Looks like she's setting up for the Justine Jam. A tribute move in tribute gear. We're about to see a once-in-a-lifetime moment. Now, if Charlotte Flair has anything to say about it. You only have one chance to make a first impression. ये साले चीटिंग पे चीटिंग यार, कितनी गलत बात है। And Rhea's taking advantage. Riptide. Covered by Ripley. Rhea got her. With the elimination, Team Raw now has the advantage. गलत बात है ना। For the Blue Squad. She definitely didn't expect to be out so early in this match. हमारी एमिली को पहले ही बाहर कर दिया इन्होंने चीटिंग करके। कोई बात नहीं, एमिली विल बी बैक। And it looks like Charlotte Flair is determined to add insult to injury. Wait a minute. Hall of Famer Justine is here. We haven't seen Justine in a WWE arena for over तो गाइस, शी इज जस्टिन। तो ये जस्टिन है जो हॉल ऑफ फेमर है हमारी। Six-time women's champion here tonight in any circumstance. And it looks like Justine is just as thrilled to see them. Things might not have turned out how she wanted for her niece, but she's loving this crowd. I'm just hoping that Justine can get her niece on the right track. After this debut, she certainly needs some guidance. चलो कंटिन्यू करते हैं। अब बढ़ेगी हमारी मायरा का स्टोरी लाइन थोड़ा सा आगे। The Team Raw women should show that they have both persistence and fortitude by beating the match. Congrats, Red Brand. Didn't hurt that Emily. Easy it for us. Oh, Charlotte didn't waste any time in calling her out. Kind of a dug tribute gear through. I was a huge, real Justin growing fan. Nice. तो चलिए ठीक है, बैक करते हैं। सोशल मीडिया फीड्स आ चुके हैं। एट्रीब्यूट्स अपग्रेड, स्टोरी प्रोग्रेस, क्लियर नोटिफिकेशन कर देते हैं हम। बैक करते हैं। नाउ लेट्स सी, मॉली हॉली इज बैक अगेन। I can't say that was the debut we were hoping for. I don't know what happened. It was like you said, I got a little inspired by Justine, and I wanted to do her justice with her old finisher. So you decided to do something showy, took your eyes off what was happening, and let Charlotte blindside you. I'm sorry. I won't let it happen again. I got carried away. You did. Remember, you're here because you're good. And you could be great. I wouldn't have any patience for Justine's brat, no-talent niece. But don't expect everything to come all at once. You could have gone out there and had a solid match, and that would have been enough, win or lose. But you bit off more than you could chew. Maybe you're right. Of course I'm right. I'm a WWE legend. I'll do my best at damage control. At least you have some goodwill from WWE management since you decided to wear the gear. But I can't imagine they'll want you to wear it again. Not exactly the sort of performance they want to be associated with Justine's legacy. At least I'll get to wear the gear I designed next week on SmackDown. Sure, now's definitely the time to be worried about your appearance. Get your head in the game. I'll see you at SmackDown, and we'll take it from there. तो चलो फाइनली अब हमारी जो एमिली हैं वो अपने कपड़ों में आएंगी, हमारी गियर्स में। और देखते हैं, उसने थोड़ा झाड़ा है भाई इसको मॉली वॉली ने कि तुम क्या लोंडू गेम खेली हो और बड़ी जल्दी हार गई हो, हम ये नहीं चाहते थे, ब्ला ब्ला ब्ला, कि जस्टिन की ऐसे लेगेसी खराब हो, सब बिची टॉक्स। Did you hear that pop? What? The sound of my ankle popping or my career imploding? Oh, how is that ankle? Or more importantly, how's that ego? Ankle's okay. Ego? That's another story. Well, your gear looked great. Thanks. Sorry I couldn't do you proud. You always make me proud. Just have a better match next time. Besides, you may have made a mistake in the ring, but Charlotte still acted out of line. If I was medically cleared for in-ring action, I would put the queen in her place. Believe me, I'm mad about it. But I'm not sure that Charlotte did anything you wouldn't have done.
Nah, but one of the perks of having a career-ending injury is getting to apply unrealistic standards on the next generation. Why do you think I like training you so much? Right. Listen, I don't want to leave if you need to talk, but I got word that WWE management wants to chat before we head out. Something about the buzz online, whatever that means. You okay? If anyone taught me how to be resilient, it's you. I'm fine. I'll talk to you later. That's my girl. तो चलो फिर से थोड़ी सी औरतों वाली बकचोदी खत्म होने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे फोकस की तरफ. लिव मॉर्गन इज हियर गाइस. What was that about? I like to show off as much as the next person, but that was embarrassing. Sorry. I understand why you're upset, but I did my best. You grew up learning from one of the most talented WWE legends in history, and that's your best? I did a better job teaching myself in my backyard. Don't expect this to blow over with the SmackDown women's locker room. The Raw women are gonna rub this loss in our faces for a long time. Go to SmackDown guys. Go to SmackDown. तो चलो SmackDown की तरफ बढ़ते हैं. हमारा पहला मैच देखते हैं अब किसकी तरफ बढ़ता है. हमारा फर्स्ट मैच फाइनली जो टैग टीम मैच था उसमें तो भाई गंद घोल दिया चीटिंग करके. But what people forget is that for someone to win, someone else has to lose. It is better to win, though. Of course. Actually, speaking of winning, I have a few developments that Ruthless Digressions listeners will be thrilled to hear about. Oh, care to share with those listeners or your co-host? Like I told my niece at Survivor Series, patience, Robin, patience. तो चलो हमारी एमिली पहुंच चुकी है स्मैकडाउन में. अभी जल्दी से अब हम मिशंस और स्टोरी लाइन के जो हमारे हॉप्स हैं क्लियर करने वाले, हम वो भी जल्दी से एक बार नजर मारेंगे उस पे कि क्या क्या हमें अचीव करना है इस माइराइज मोड को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ऐसे ही आलतू फालतू खेलने से बेटर है कि हम लोग जो हमारे पॉइंटर्स हैं जिनको हमने अचीव करना है उसको हम गौर करें. Hey, I got pulled in all my hands in a meeting with the top manager who knows long will be. Go settle, maybe grab some food in the catering and I'll come find you. Welcome. Okay, guys. Hey, ठीक है पढ़ लिया तो चलते हैं वापस. ओह ड्यू ड्रॉप चैंपियन है. ओह भाई हंसी आ गई देख के भाई मेरे को यार. Hey! Welcome to SmackDown. Thanks. You know, after what Liv said at Survivor Series, I wasn't sure if I'd be getting the warmest welcome today. Oh, you won't be. But I have a different perspective than the rest of the girls. In fact, I'm actually usually pretty rude to the newbies because, well, I don't want them coming for my SmackDown Women's Championship. But I don't have to worry about you at all. But I plan on coming for that championship. Oh my goodness, you're hilarious! After your huge mistake in the Survivor Series match, I know that must have been a joke. I don't have to be rude to you at all. We can be friends. I think we're done here. टॉम ये कौन है चाचा जी. LJ, welcome to SmackDown. How you doing? I'm sorry that Survivor Series didn't go so well. Yeah, not the debut I was hoping for. सबने भाई बेइज्जती करने ले Well, रखी you're है. here now and have your whole career ahead of you. Listen, I may just be a cameraman, so I can't help train you, but I've been with WWE long enough that I pride myself on knowing how things work around here. Happy to answer any questions you might have. How do I get a match? Well, you'll want to talk to Molly first so she can let you know what management has in mind for you. But generally, I've found that matches in WWE, whether they come from management or not, get booked in one of two ways: talking to people or checking your social media messages. What do you mean, talking to people? I mean just that.
Aside from being booked by management, you'll find that chatting with other superstars, the crew, or even other backstage visitors can lead to opportunities. Sometimes people might have favors to ask of you, others might have bones to pick. You know how they say it's who you know? That's definitely true in WWE. Huh. Seems so easy. It is. Don't try to put too much on your plate, though. You can always tell somebody who wants a favor no and come back to it later, or diffuse a tense situation. I understand. So take it one thing at a time. Makes sense. And the other way to get matches? You mentioned social media. I'm gathering I shouldn't try to go on a social media hiatus while I'm a WWE superstar? Definitely not. Even a dinosaur like me relies on that instrument of the devil. If you don't check your social media, both the public feed and your direct messages, you might miss out on opportunities. Okay, so check my social media feed and direct messages. Got it. Any other questions? Or anything you'd like me to explain again? How do I get a match? What do you mean talking to people? I understand. Okay. How do I get a match? अबे यार जल्दी जल्दी में मैं दोबारा दबाए जा रहा हूँ. Thanks, Tom. I think I have. Fantastic. चलो चलो निकलो निकलो बेटे निकलो. बहुत हो गया तुम्हारा. अरे फिर मोली होली. अरे यार एक तो तब से गेम लगा रखी है बकचोदी नहीं खत्म. I know I didn't exactly get the best start, but I've got my head on straight now and I'm ready to go. That's great to hear. What do you have for me tonight? Now here's something that's less great to hear. WWE management thinks that after everything that's happened, we should take a beat before we put the spotlight back on you. Don't worry. I took your advice to heart. I'm okay with starting small, out of the spotlight. I'm not expecting to main event right away. Good, because you won't be. I'm going to level with you. Backstage sentiment is not good right now. You may be a SmackDown superstar, but you've got an uphill battle if you actually want to be on the show. चलो यार गाइस पॉज करके देख लेना यार. थोड़ा सा अपन लोग इसको स्किप करते हैं. बहुत ही ज्यादा बकचोदी हो रही है यार भाई. What can I do? I don't want to just sit in catering. No one does. But this will all... How am I supposed to do that if I can't get a match? I said I couldn't get you a match on SmackDown. There are other opportunities to wrestle. Actually, I can pull some strings and get you on main event. You'll need to find an opponent, though. Most of the roster is pretty busy with commitments on SmackDown. Pretty busy or pretty mad at me, from the sound of it? Yeah, I may have heard those rumblings. Although, have you met Ava Moreno yet? She's pretty new to SmackDown too, and also would have something to gain with a good showing on main event. We've met. I'm not sure she wants to work with me. Neither of you have to work with anyone. You just have to show up and fight each other. Get her to agree to that, and I'll set up the match. If there's some sort of beef between you two, lean into it. No one said the match had to be friendly. अरे चलो 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 बहुत बकचोदी यार. इतनी बकचोदी यार हद हो गई है यार. मैं तलब गया हूँ. फिर आ गई. अबे खेलोगे कि सिर्फ स्टोरी? Little Justine. अच्छा ठीक है भैया ठीक है ठीक है. I feel like what do I want? I just feel like maybe we got off on the wrong foot at Survivor Series. Tensions were high. I probably unintentionally insulted. चलो ठीक है blah blah blah. I was hoping we could help each other. Molly says she can get me a match on main event if I can find an opponent. After everything you said at Survivor Series, I thought of you. Are you interested? Sure. Great. That was actually easier than I thought. Oh, but let me be clear. I want a match on main event, but not one against you. I want to make an impact here in WWE and make my matches count. It doesn't help me at all to defeat some jobber. What did you just call me? If I wasn't perfectly clear, बेइज्जती कर दी भाई बेइज्जती कर दी. Regardless of what you think of me, ये बेचारी जब से आई है I इसकी know as well बेइज्जती as हो you रही do है that यार. no one else in the locker room is going to help you. गजब बेइज्जती जैसे जिसको बोलते हैं ना गजब We can agree बेइज्जती. to disagree.
गजब बेइज्जती बेटे, गजब बेइज्जती। मैच वैच खेलोगी कि नहीं? अबे यार अभी भी मैच नहीं किया। आई विल बी वाचिंग दिस मैच नाइट ब्रेक द लाइक्स has it out for me. Management has it. I messed up. Okay. चलो भैया चलो, मेन इवेंट पे एक मैच तो खेलो भैया। आज का पहला एपिसोड लग रहा है सिर्फ बकचोदी में ही चला जाएगा, और हमारी ऑडियंस जो हमारे यूट्यूब के जनता है उनको यार फाइट देखने को नहीं मिलेगी। एक फाइट देखने को मिली लेकिन उसमें चीटिंग हो गई, हमारी एमिली हार गई। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मेन इवेंट का मैच है, इसमें हम एमिली को जरूर विन कराएंगे, पूरा कोशिश करेंगे भैया, एकदम गजब कोशिश करेंगे। अबे फिर से बकचोदी, अरे यार हद हो गई है यार। I've got some good news. You've actually got a match for me this week? Actually, yeah. Wow, I wasn't expecting that. I should clarify. It's not on SmackDown, but at a non-televised live event. Dana Brooke was supposed to have a match, but she did one too many handsprings, sprained her wrist, and can't compete. A match is a match, and if it helps me win a little favor around here to step up, count me in. Winning the match would help you gain even more. चलो भाई कुछ तो आया है। यस यस फाइनली मैच आया, खेलने को मिला भाई, गजब मैच। ओ फाइनली हमारी एमिली यार अपने अवतार में आई है। Making her way to the ring from Delhi, India, the Eagle, Emily G. लड़की हमारी शेड्स वेड्स लगा के आई है भाई। Mela is money। ओ भाई पहला मैच कार्मेला के साथ है, क्या बात है। And from Staten Island, New York, the most beautiful woman in all of WWE, Carmella! फाइनली बढ़ते हैं यार। अच्छा ट्राई टू रीगेन मोमेंटम एट द लाइव इवेंट। वे एक बार देख लेते हैं व्हाट डज दैट मीन। ट्राई टू डिफीट कैमेरा बाय एनी रिजल्ट रीगेन द मोमेंटम टू अटेम्प्ट पिन। अच्छा बस ठीक है, कार्मेला को बीट करना है, दैट्स इट।
अरे फिर से पिन, यार पिन बहुत करते हैं ये लोग। ओ भाई रेजिलेंस, यार मेरा रेजिलेंस, ओ मैंने भी खींच लिया भाई। पेलो कार्मेला को, पेलो भाई, पटक पटक के। भाई कार्मेला, नहीं कार्मेला तो पेलने लग रही तो हरियाणवी। अब मारूंगा मैं कार्मेला को, बहुत हो गया कार्मेला का। ओ भाई फिर से रिवर्सल कर गई यार, क्या सही बंदी है यार। हम भी कर गए रिवर्सल। A leg drop out of nowhere. Kinshasa. So finally guys, हमारी एमिली जो है वो हमारा अपने करियर का फर्स्ट मैच विन कर चुके हैं। तो जल्दी से कंटिन्यू करते हैं आगे की स्टोरी और देखते हैं आगे की स्टोरी लाइन में क्या है। तो गाइज क्या कहते हो, आज की स्टोरी लाइन को यहीं खत्म करते हैं हमारे पार्ट 1 को। सो जैसे ही और हम इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 से, तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स जैसे हमने 2022 के लिए खेले थे हमारे फुल माई राइज एपिसोड्स, तो वैसे ही हम 23 के लिए अभी माई राइज लेगेसी खेलेंगे और इसमें तो दो दो लेगेसी मोड्स हैं, सॉरी माई राइज मोड्स हैं। सो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगा और तो लाइक कीजिए, और सपोर्ट के लिए गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूँ यार आप लोग, बहुत सारे लोग हैं वो वीडियोस देखते जरूर हैं और कंटेंट भी उनको अच्छा लगता है, लेकिन यार वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं गाइस। तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है गाइस, बिकॉज ये गेम्स हम आपकी एंटरटेनिंग के लिए खेलते हैं, आपको दिखाने के लिए खेलते हैं कि गेम्स कैसी हैं। और इससे आपको एक फीडबैक भी मिलता है, कल को आपको गेम परचेज करनी है तो आपको पता लगता है कि गेम्स कैसी हैं। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।